welcome to Academy and more. In this session, we are going to take a look at RAM basics, which is reliability, availability, and maintainability of a plant or system. Okay, so this is going to be the part one, and in the part two, we are going to study it further. में हमारे learning objectives क्या हैं? So first one is what is a RAM study? We will define what a RAM study looks like. Then the second is why RAM studies matter. Then comes reliability basics, उसके बाद availability basics, then maintainability basics, and maintainability basics, RAM modeling approach, RBD which is reliability block diagram, and RAM outputs. ये second part में इस session के second part में हम study करेंगे. So let's look at what is a RAM study or analysis. So a RAM study is an engineering analysis used to predict how reliably a system will perform. It helps identify weak points in a design, evaluate alternative layouts, and estimate production losses due to equipment failures. ठीक है. RAM study basically अगर आप oil and gas की terms में देखें, oil and gas में दो major types हैं, upstream and downstream. Upstream है exploration and extraction, and then downstream is distribution and export. तो अगर आप एनालिसिस कर रहे हो कि आपका जो ऑयल एंड गैस की फैसिलिटी है, ठीक है, जिसमें एक्सट्रैक्शन और एक्सप्लोरेशन हो रही है, उसमें आपका सिस्टम लेट्स से फॉर द नेक्स्ट 10 इयर्स उसमें प्रोडक्शन अवेलेबिलिटी कितनी होगी, और उसकी स्टडी को हम रैम स्टडी करेंगे. और बेसिकली ये एक इंजीनियरिंग अप्रोच है जिसमें आप बॉटलनेक्स को, ठीक है, अल्टरनेटिव डिज़ाइंस को, ठीक है, फिर मेंटेनेंस स्ट्रेटजीज़ को आप ऑप्टिमाइज़ करते हो टू गेट टू द टारगेटेड अवेलेबिलिटी. ठीक है, तो दिस इज़ व्हाट अ रैम स्टडी इज़. सो इन शॉर्ट पॉइंट्स इट विल प्रिडिक्ट सिस्टम परफॉर्मेंस और प्रोडक्शन अवेलेबिलिटी. ठीक है, प्रोडक्शन अवेलेबिलिटी मीन्स कि आपकी जो प्रोडक्शन हो रही है और जो टोटल पोटेंशियल है उसका रेशो. सही है, तो इसकी जो हम स्टडी करेंगे वो इसके अकॉर्डिंगली करेंगे, जिसमें ये सिस्टम हमें प्रेडिक्ट करेगा कि सिस्टम की परफॉर्मेंस फॉर द नेक्स्ट 10 ईयर और 20 ईयर और वट एवर द टेन्योर यू आर गोइंग टू एवेल्यूएट. ठीक है, तो उसमें ये सारी चीज़ें वो कवर अप करेगी. देन आइडेंटिफाई बॉटलनेक्स, उसमें कौन से शॉर्ट कमिंग्स हैं, कौन से वीक पॉइंट्स हैं आपकी डिज़ाइन में, आपकी मेंटेनेंस स्ट्रेटजी में, ये सब इसमें कवर हो जाएगा. थर्ड वन इज़ एवेल्यूएट डिज़ाइन ऑप्शंस. ठीक है, आपके पास कौन कौन से डिज़ाइन ऑप्शंस हैं, कौन सी मॉडिफिकेशंस आप कर सकते हो डिज़ाइन में टू गेट द मैक्सिमम प्रोडक्शन अवेलेबिलिटी. एंड द फाइनल वन इज़ सपोर्ट डिसीजन फॉर रिलायबिलिटी एंड कैपेसिटी. ठीक है, obviously if you are going to perform a thorough RAM study on your oil and gas facility, then after the study is completed you are going to get some recommendations from the RAM modeler or RAM contractor. ठीक है, then you will have some choices of to make some decisions regarding your facility. So this is what your RAM study is all about. So RAM is an abbreviation of reliability, availability, and maintainability. So the second part is why RAM studies matter. तो RAM study क्यों करनी चाहिए? So basically it will derive major business decisions. They show where reliability improvements will save the most money, reduce downtime, and increase safety. So safety इसमें एक additional part मैंने ऐड किया है. वैसे RAM में ये safety include नहीं होगी. ठीक है, so if it is only a RAM study then it will not cater for the safety or environmental prospects of the study. ठीक है, तो वो अगर सेफ्टी इंक्लूड होगी तो वो RAMS रैम्स बन जाएगा. सही है, सो दिस इज व्हाई RAM study is important because it will help you identify the points or the areas where you will
मेक सम एफिशिएंट डिसीजंस, और उसकी वजह से आपको रेवेन्यू में भी फ़ायदा होगा, आपकी जो प्रोडक्शन है लॉसेस भी कम होंगे, डाउन टाइम भी आपका कम होगा. सो इट हेल्प्स ऑर्गेनाइजेशंस टू रिड्यूस डाउन टाइम. Then it will increase production uptime. Uptime matlab availability to perform the intended function of an equipment or a system, ठीक है, without any failure. And then it improves safety again. If you are going to involve safety perspective as well, then it will be RAMs. And the final one is optimize maintenance and spare parts. तो स्टडी की बेसिस पे आप अपनी मेंटेनेंस स्ट्रेटजी को, आपकी स्पेयर पार्ट्स अवेलेबिलिटी को आप मेंटेन करोगे और डिसीजंस लोगे. एंड देन द फाइनल वन इज मेक बेटर डिज़ाइन डिसीजंस. सो व्हाट इज़ रिलायबिलिटी बेसिक्स. सो रिलायबिलिटी को हम सिर्फ बेसिक्स इसके देखते हैं. अगेन इट इज़ अ वेरी वास्ट फील्ड एंड देयर इज़ सो मच लिटरेचर एंड technicalities involved in reliability. So reliability is all about how long equipment performs without failing. ठीक है. And MTBF, which is mean time between failure, and failure rate are the most common reliability indicators. High mean time between failure means fewer failures and greater uptime. So mean time between failure, कोई से दो फेलियर, सक्सेसिव फेलियर्स के दरमियान जो इंटरवल है, दैट कैन बी इन टर्म्स ऑफ आवर्स, मंथ्स और ईयर्स. ठीक है. उसमें कितना गैप है. सो इफ़ द गैप इज़ like let's say 2 years as compared to the equipment which fails after every 1 year, so the one which is going to fail after every 2 year will have better reliability and greater uptime. So then reliability equals probability that equipment performs its given function for a given time. ठीक है. So this is the probability. So let's say upstream जो facility है उसमें efficiency अगर 0.01 भी बड़ी मैटर करती है, so your equipment should be, or your system or your unit should be reliable enough to meet the targeted availability and performance. सो की मैट्रिक्स कौन से हैं. फेलियर रेट मतलब द रेट एट विच एन इक्विपमेंट फेल्स. ठीक है, कि हाउ ऑफन योर इक्विपमेंट फेल्स, दिस इज व्हाट फेलियर रेट, एंड इट इज डिनोटेड बाय लैम्डा. एंड देन मीन टाइम बिटवीन फेलियर्स. सो दिस इज रिलायबिलिटी. तो इसके लिए आपके पास मेंटेनेंस डाटा में सबसे अहम चीज़ क्या है, मीन टाइम बिटवीन फेलियर. ठीक है. एंड उसकी बेस पे आप फेलियर रेट भी आप निकाल दोगे. ठीक है. सो फेलियर रेट विल बी 1/MTBF. ठीक है. देन अवेलेबिलिटी बेसिक्स. सो अवेलेबिलिटी टेल्स यू how often an asset is actually operational. It depends on both reliability and maintainability. You can have a reliable machine with long MTBF, but if repair time is long, availability will suffer. Okay. तो अवेलेबिलिटी बेसिकली ये है कि आपका जो इक्विपमेंट है या एसेट है वो एट एनी गिवन पॉइंट वेदर दैट इज़ अवेलेबल और नॉट. ठीक है. सो दिस इज़ द प्रोबेबिलिटी. तो ये डिपेंड किस पे करता है, बोथ आपकी रिलायबिलिटी पे कि हाउ रिलायबल इज़ योर सिस्टम एंड हाउ मेंटेनेबल इज़ इट. लाइक मेंटेनेबिलिटी आपको बता देता हूँ, वो वैसे हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे. मेंटेनेबिलिटी is the time where where you perform all the repair works. ठीक है. अगर ये टाइम ज़्यादा लगेगा, ठीक है, तो आप चाहे आपका MTBF वो बहुत ज़्यादा भी हो तो आपकी अवेलेबिलिटी कम हो जाएगी. ठीक है. सो दिस इज़ अवेलेबिलिटी. अवेलेबिलिटी का फार्मूला क्या है, अप टाइम डिवाइडेड बाय अप टाइम प्लस डाउन टाइम. सो मीन टाइम बिटवीन फेलियर divided by mean time between failure plus MTTR. MTTR is mean time to repair. ठीक है.
So it is influenced by reliability and repair time. So, so thank you so much for your time. This is the part one, and I'll see you in the next session.